डॉक्टर रविशंकर आमचे डिरेक्टर मेडिकल सर्व्हिसेस आहे. तर ही मुलगी गोल्डन आवर मध्ये हॉस्पिटल ऍडमिट झाली होती का उशीर झाला होता? तर ती गोल्डन आवर मध्ये गेली म्हणजे फॉर्च्युनेटली ऍक्सिडेंट झाला त्याच्यानंतर बायस्टँडर लोक जमा झाले होते त्यापैकी कोणतरी तुला जवळच्या एका नर्सिंग मध्ये दिलं तुला स्टेनलेस आणि ताबडतोब प्लेस रिसिव्ह केलं. आपलं आयुष्य दोन गोष्टींवर चालतं, रेस्टोरेशन आणि सर्क्युलेशन. आपण रेस्टोरेशन मध्ये ऑक्सिजन आतमध्ये गेलो इतर सर्क्युलेशन मार्फत सगळ्या अवयवांना ऑक्सिजन केलं. या दोन महत्वाच्या गोष्टी इमिडिएटली अटेंड केल्या जातात. त्या अटेंड केल्या तर रेस्टोरेशन चालू होण्याकरता त्या इंटिमेट करण्यात आलं आणि ताबडतोब प्लेस केलं. आणि इकडे आमच्या एमर्जन्सी मध्ये आल्यावर डॉक्टर नितीन जगेचे आता तुम्हाला कळलं आमच्या रिजनचे डिरेक्टर इमर्जन्सी मेडिकल हेड आणि ते पुढे सांगतील यामध्ये आलेले काय केलं. थँक्यू सर. सॉरी मेरा मराठी वर्किंग. सो जैसे सर ने बताया तो बहुत है कि आपके मेन जो पॉइंट है कि अभी भी देयर इज अ स्लाइट डाउट जो बायस्टैंडर्स रहते हैं कि हम पेशेंट को लेके जाएंगे, तो ये सिचुएशन में वो डाउट नहीं था. एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट कंपल्सरी क्योंकि वो इमीडिएटली देख दिया एक्सीडेंट उनको लेके गए. आजकल वी आर सीइंग लॉट ऑफ सच केसेस जो बायस्टैंडर्स लेके आ रहे हैं. So that is very important. So we need to highlight that. अभी there is no medical legal risk to them. पुलिस की तरफ से किसकी तरफ से उनको नाम नहीं बताने कुछ नहीं बताने उनके अगेंस्ट नहीं होगा. So that needs to be highlighted. That is one of the main points. That bystanders जो अपने वो पेशेंट के हित में जो भी कर रहे हैं उनको कभी उससे तकलीफ नहीं होगा. तो उनको लेके जाना बहुत जरूरी है. That is important. गोल्डन आवर जैसे सर ने और आपने पूछा तो गोल्डन आवर में जो ट्रीटमेंट है पर्टिकुलरली एक्सीडेंट विक्टिम में हार्ट अटैक उस समय भी होता है. एक्सीडेंट विक्टिम में जहाँ अक्यूट ब्लीडिंग है डॉक्टर बापी ने आपको बताया तो ब्लीडिंग रोकना और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना और जो इनिशियल मैनेजमेंट है दैट इज द गोल्डन आवर एंड दैट इज द एब्सोल्यूट की. एंड अपोलो हॉस्पिटल प्राइवेट ऑन दैट. अपोलो हॉस्पिटल अभी काफी सालों से आप सबको पता है बट अपोलो वेरी क्लियर है इमरजेंसी में. आप लोग ने भी अभी नवी मुंबई में अक्रॉस इंडिया देखा होगा कि इमरजेंसी सर्विसेज आर केप्ट एट द टॉप लेवल प्रायोरिटी फॉर द मैनेजमेंट. ऐसा कोई पेशेंट आता है सो अगेन डॉक्टर बापे हाइलाइटेड ऑल द स्पेशलिटीज अंडर वन रूफ. ऑल द पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ऑल द ट्रॉमा स्पेशलिस्ट जो भी है सब एक रूम के अंदर है. और प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल मतलब थर्ड इसके बाद इसके बाद इसके बाद. So those things are already in the system. We are all sitting here as part of that. So we all know हम लोग का role क्या है and how we fit into that. So that golden hour is about that. From the community response, bystander, and then the hospital giving the complete, readiness and actually delivering that care. वो moment पे जो जरूरी है वो identify करना और वो care देना. That is what actually makes the main difference. Is what we talk about the golden hour, and that is what we are, being able to do in this, thanks to everyone involved. Doctor, in case of critical emergency, there is always requirement of blood, some special blood group, or might be some organ is also required. So how is the hospital is equipped with that and Actually, yeah. So that's what I was highlighting. Actually, आपने वही point लिया है. So blood bank यहाँ पे 24/7 है, and we are ready and we are prepared for that. तो जैसे आपने सही बोला कि मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स रहते हैं बट इमरजेंसी सिचुएशन में एनीवेयर इन द वर्ल्ड द प्रोटोकॉल इज टू यूज व्हाट वी कॉल ओ नेगेटिव ब्लड. तो हमारे यहाँ पे वो स्टॉक में रहता है. कपल ऑफ डेज अगो आल्सो वी हैड अ मेजर इमरजेंसी. वी हैड टू शिफ्ट द पेशेंट टू ओटी विद इन हाफ एन आवर एंड वी हैड टू गिव ब्लड ऑन अवेलेबल. तो ओ नेगेटिव ब्लड इज सेफ एंड दैट इज अवेलेबल हियर 24 आवर्स. एंड वो देने का भी प्रोटोकॉल है तो वो भी एस्टैब्लिश्ड है बिकॉज यू कैन नॉट. इट्स अ वेरी what we call important thing. So all that is in place 24/7. Organ support also, चाहे वो ventilator or dialysis हो जो भी organ support है that is also available. And all that is tried and tested. What I mean, आपने drills सुना होगा, mock drills. So we have regular drills making sure कि यार equipment चाहे वो blood हो या instrument हो or doctors हो. Recently we had a drill on stroke also. So we make sure that the system is ready 24/7. Sunday हो, Christmas हो, Diwali हो, emergency देख के नहीं आता है. So the Apollo hospital is 100% ready 24/7.
Now, another question is, all the specialty doctors are available as sir has told multiple doctors who are required for this kind of surgery. Absolutely. Yeah, actually, so I just add that जैसा कि डॉक्टर अभिजीत ने पहले हाईलाइट किया कि this was a very good example of a team approach. Like you can say, जैसे patient हमारे ER में आए, पूरी ER team, our pediatric team, our plastic surgery team, our orthopedic team, and subsequent care ER team, psychologist team, and pediatric intensive team. So everybody together came along to save this child and bring this child. Now, seeing the child walk home, the child take part of which was a children. So it was so satisfying for the whole team, and it was a very good example. Team approach, and all the consultants are in house. यहाँ में किसी से बाहर से किसी की मदद नहीं की जरूरत है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं ऐसे केसेस आते हैं ज्यादा तो हॉस्पिटल में ये होता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, अभी इसके साथ कोई देख ही नहीं रहा है, बाई स्टैंडर्ड लेके आया है, इसका खर्चा कितना होगा, बिल कितना होगा, बट अपोलो में हमारा सिस्टम है एक्सेस मैनेजमेंट is like we don't even look at exactly what it is. So insurance है, कौन आएगा, parents आएंगे नहीं आएंगे. So in such cases, emergency cases, our prime aim is to save life, stabilize the patient, stabilize that. And so same ambulance कि कॉल आती है तो हमारा please की ambulance we go pick up, we don't start for that pick up and drop, and we don't look at the financial at all in this in such cases. So this is also an example like nobody even knows that what is going to be the expenditure. The prime aim of the whole team was to stabilize the child, save life of the child, and save the child. मैं तो अपील करूंगा यू आर द बेस्ट लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड द हेल्थ केयर सिस्टम एज अ रिस्पांसिबल मीडिया यू मस्ट मेक पीपल अवेयर दैट हाउ बायस्टैंडर्स रिस्पॉन्स कि मुझे ये नहीं कहा कि मैं इस झमेले में हूँ यूजुअली प्रेगनेंसी एक पुलिस केस होगा मैं क्यों इस झमेले में हूँ मैं मेरे काम से रात के दिन पे किसी ने बच्ची को उठाया और सीधे नर्सिंग होम ले गया एंड गोल्डन आवर जैसे आपने पूछा इट इज शॉर्ट गोल्डन आवर दैट इज मोस्ट स्पेशल कवर एंड एक्शन केस में डॉक्टर जैसे डॉक्टर नितिन ने बताया ब्लड की जरूरत है यहाँ पे ब्लड अवेलेबल एंड सबसे इम्पोर्टेंट वी रियली वांट टू सेट दिस अक्रॉस दैट सेविंग लाइफ इज द ओनली मोटो when an emergency comes to the emergency room. वहाँ पे ये कौन है, अफोर्डिंग है, एक कुछ नहीं दिखाया जाता. पहले पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है, लाइफ सेव किया जाता है, एंड उसके बाद में फिर बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती हैं. And then the options are given to you. And many times it is saying that emergency helpline number always not operational. So in such cases, what is the case in Apollo? You have 1066. You dial any time at any point of the day or night. And somebody would attend to it, and we have 24/7 emergency ambulance service. The ambulance source gives the patient up and trains back to me. It is we like to. No, sir, आपने बोला 1066 is the number. It is that again we check the order and make sure कि कभी भी उसमें issue नहीं हो. Plus that line is connected to the emergency department. So if a patient or a doctor even calls for some advice, or they want to shift the patient, so even that immediate connection is made to support their decision making. For उनको अगर जो भी doubt है, तो उसके लिए भी the emergency number will connect to the doctor if they need some specific info. आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि मल्टी डिसिप्लिन टीम के स्पेशलिस्ट तक वहाँ पे मौजूद थे क्या? See, emergency department is well equipped and emergency specialists जो है, they are capable of handling this emergency, stabilizing the patient and simultaneously calls are sent out with respect to जैसे मैपिंग किया जाता है इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन की जरूरत है, प्लास्टिक सर्जन की जरूरत है, एक न्यूरो सर्जन की जरूरत है, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो अकॉर्डिंगली इट्स अ मल्टी इवन इन द इमरजेंसी रूम तो ये साइमल्टेनियसली सब होता है. पहले स्टेबलाइज किया जाता है, ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक को ऑटोमेटिकली ब्लड लाया गया, ब्लड दिया गया एंड बाकी लोगों को कांटेक्ट करके कंसल्टेंट्स वर समवन इमीडिएटली एंड आई मीन आई रिपीट दैट जैसा दिस इज वन एग्जांपल वेयर मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हैज प्लेड अ मेजर रोल. सिमिलरली जैसे डॉक्टर नितिन और डॉक्टर रवि ने बताया आपको कि हमारे यहाँ रेगुलर तौर पे ड्रिल्स होते हैं.
अभी 2 दिन पहले हमने डिजास्टर रिलीव किया, जैसे कोई कैलामिटी हुई और बहुत सारे पेशेंट आए, राइट फ्रॉम सिक्योरिटी टू नर्सिंग स्टाफ टू हाउसकीपिंग स्टाफ सब फील्ड में शामिल होते हैं। एंड वी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हम हमेशा चेक करते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमम हेल्थ केयर हम डिलीवर कर सकते हैं। Thank you. So PR की ट्रेनिंग हमारे जो PR डॉक्टर्स हैं ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो हर तरह के इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। बट कितनी लंबी चौड़ी जो आप टीम का इन्वॉल्वमेंट इसमें देख रहे हैं मल्टीस, तो वी हैव अ सिस्टम ऑन डिपार्टमेंट से एक कंसल्टेंट हर दिन वो पब्लिश होता है पूरे महीने का लिस्ट PR में वो लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इमीडिएटली जैसे ही कोई सिचुएशन आती है कोई पेशेंट के एंट्रेंस के टाइम पे एंटिसिपेट करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेटजीज लगेंगे, वो सबको कॉल करते हैं और वो ऑन कॉल हो उसी तक तुरंत PR मिला करते हैं। So, सब लोग बैटिंग नहीं रहते हुआ, बट विदिन फ्यू मिनट्स 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जैसे पूरी PR में कॉल हो। सर, नवी मुंबई में अपोलो हॉस्पिटल एक नामांकित हॉस्पिटल माना जाता है। हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, इसमें ट्रीटमेंट बढ़िया ऑलराउंडर मतलब सर्वांगीण होना चाहिए। तो वही हिसाब से आप जनता को नागरिकों को क्या सजेशन देंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट आपको पाएगा? सो हमारा संदेश ये है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और आउटकम वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल हॉस्पिटल का कॉस्ट, किसी हॉस्पिटल में कितना एक्सपेंडिचर लगता है, कितना कॉस्ट है, उस पर नहीं जाना चाहिए। उस ट्रीटमेंट का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, और वो जो हमारा है वो बहुत ही काबिल दर्जे का, बहुत ही टॉप क्लास है। तो हमारा क्वालिटी ऑफ केयर है तो बहुत ही टॉप क्लास है। तो इस सब चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो हॉस्पिटल इस हिसाब से बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं, हमारा जो प्राइमरी मोटो है, हमारा जो प्राइमरी वो है गुड आउटकम, गुड क्वालिटी ऑफ केयर, सेविंग लाइफ एंड ट्रीटिंग इलनेस, दैट इज आवर मेन मोटो rather than we are a publicly unit that's differently altogether, but we are also conscious of the fact that we are a healthcare organization and we rise to the occasion whenever there is a requirement. In this case, Dr. Yevi wants to say something. I wanted to just highlight कि आपने सही फरमाया कि हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो या वो प्रैक्टिक एक्सीडेंट हो, अपन हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन क्वालिटी के वे 9 साल से दे रहा है। इसके लिए 3-4 चीजें होती है। क्या क्या लगता है? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो है, वो कई जगह पे होता है। एक्सपर्टीज लगती है, जैसे कि मैंने बताया काफी टीम मेंबर्स है, वेल ट्रेन टीम मेंबर्स है। तीसरा फिक्स प्रोटोकॉल्स लगते हैं जिसको हम क्लिनिकल पाथवेज कहते हैं। एंड फोर्थ इज दैट inner desire and eagerness. All of us are here to save lives and give quality. And 1066 है emergency number है। The moment we get a call, हमारा stroke patient या कोई heart attack patient का time to repair the damage vessel देखिए, तो it is maybe the world class benchmark. तो ये हमारा कोशिश करता है। जब सबसे important बात हम ये कहना चाहेंगे कि quality care is requires a lot of infrastructure, equipment, expertise, manpower. There is a cost to it. After we are a private hospital, but at the same time, bottom line, there is saving life. This is to run backward. पहले life बचाएंगे अपन, then patient को option दिए जाते हैं, and then all sorts of supports and thankfully, कई बार media also gets involved and they help the patient. In this case, what amount of time would have been delayed time for this child, considering the situation in which she was? You mean right? Yeah. The first slide है अभिजीत को highlights है। तो meaning होता है जैसे एबीएस सर ने बोला breathing and circulation, respiration। तो इनको बहुत सारे facial injuries थे, बहुत सारा bleeding था। तो वो एनर्जी जो रहता है, जो जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन अंदर जाता है lungs में, that will get compromised. That is why the golden hour again. वो compromise हो गया। So that was one. And the second would be circulation, जहाँ पे bleeding, blood loss है।
So anybody has a limited amount of blood in the system. So being a kid, we are given less. So that was the main two risk factors. Putting that together जो उनकी injuries है, ये जो fractures है, these are probably going to take some time. They were to be life threatening. But the blood around because of the facial injuries and the oxygen, probably you can say it is actually the golden hour. So within an hour, if the kid wouldn't have got the right care, he probably wouldn't have. And that's the beauty of it as well. Because in that 1 hour, when we can manage that, then rest of the things, the children are the most resilient. And I don't need to talk, there are so many pediatricians, but children are the most resilient because they can fight and they can come out of anything, like we have seen in this case, and we have multiple examples. So that golden hour is even more vital. वो पहले घंटे में वो पहले इंजरी को हम लोग बढ़ने ना दे, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है ब्रीथिंग और सर्कुलेशन वो अगर मैनेज हो गया, but otherwise to answer question short, maybe 30 minutes to 1 hour would be the time where if that initial care wouldn't have happened, we would have lost it. So as an extension to this, I mean, we are extremely confident, we are very happy and it is very rewarding to see the child walk home. But at the same time, let's not undermine the important work given by the bystander who picked up the child and took him to the hospital. And they are also realizing that it cannot be managed unless you have a multidisciplinary, tiny referral. Maybe those those are Is the bystander identified? वो नर्सिंग होम है. नर्सिंग के लेके गए थे अच्छा. हमारे यहाँ तो ट्रांसफर आया नर्सिंग में. Which is his nursing home? I'm not aware of the When we get some bystanders, we've got a process of highlighting it. So in fact, we had one. So recently also we had a 2-wheelers. The second 2-wheeler stopped and brought that. So we highlighted, we try and recognize that. The same way we actually offer to go and train that society. Because community training is the main basic life support of BLL. So we highlight those the bystanders, we recognize them, and we would actually want to use them to go to the community. उनको भी प्रशासन plus बाकी लोग देखेंगे. So we need to highlight all such cases which we have seen. In this case, because it went to the nursing home, we are not sure. Let us welcome our unit head, Dr. Kiran Shikode is here. Dr. Kiran Shikode is our unit head, the Apollo Hospital in Navi. My next question would be to Dr. Ghosh. So what are the challenges the child face now? I'm told that she's not aware about her father as well. So is there any particular way that that news can be broken to her? Like, yes. So basically, initially जो होता है जब इतनी बड़ी accident हुई है, तो the first goal is to save the life of the patient. So initial stage में psychological well-being उसके बाद आता है जब धीरे-धीरे she was recovering. उसके बाद definitely she was not told about this incident because हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि 5 साल की बच्ची वो just recover कर रही है. उस समय we will not disclose any kind of sensitive thing which might lead to a post-trauma stress. So now when she's coming for follow-ups, धीरे-धीरे so we are working on the acceptance level. And जैसे कि आपको पता है, children are very intelligent. कहीं पे जब मैं उससे बात करती हूँ, I can understand that she is also trying to accept and understand. And also somewhere she is very well equipped with the fact that उसकी रोटी पे भी एक बहुत गहरा सदमा पड़ा है. So when I speak with the child, I can very well understand कि उसको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, which is also making it easy for me to gradually expose her to this situation. And she's emotionally also recovering now, and she's very expressive about a few things. Her session में our focus is to motivate her, and धीरे-धीरे gradually we will go to the part of telling it in a very, very rational and very mature way, ताकि वो भी उस चीज को suddenly उसपे कोई भी emotional trauma effect ना करे. That's why we took some time. And it's very, I'm very happy to see that she is trying to accept it and working so well to work on that situation. so what would be the role of the mother in this situation? Yes, so the family also has to play a very crucial role here.
बिकॉज बहुत समय होता है कि मम्मी को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ रहा है, सी दैट द चाइल्ड shouldn't feel sad, seeing the mother sad. So at the same time, sessions with the mother is also important. हर सेशन में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्ची के साथ बात करके मम्मी को भी उतना ही इमोशनल सपोर्ट दे कि कहीं बच्ची के सामने स्ट्रॉन्ग रहे कि शी शुडंट फील ब्रोकन फ्रॉम विद इन। मम्मी के साथ भी हमें अलग से बात करना पड़ता है, सो दैट इट हैज टू बी अ होलिस्टिक wellness that we have to focus for both the child, the mother, and even the family members who have done really rendered good emotional support for the child. And she can add up. I mean, like, she do ask about her father, like right now he's staying with us, so she do ask about him. But then we try to get something like, we watch this, we watch this, we try to divert it. So right now, like, ma'am, like, she told that, we need to take it slowly, gradually, and we need to take it to her because, we are not been trained in that, and for us it is like little bit difficult. Obviously, even we are creating from inside, how do we tell a pilot, like, but yeah, I mean, with everyone's support over here. Has her routine life like resumed? Like, is she able to do things that she used to do? So she's walking right now, or going to be, or she won't need any kind of support. But the thing is, like, how she was before now, like, all happy, kind of okay. She's gradually coming there. Obviously, there's a big trauma. So you don't expect it, to come like within few days. But we are giving her time to accept that something has happened, something has changed. And yeah, I mean, we are giving all kind of support emotionally. What are the injuries the mother faced during this physical injuries? She had like injuries, or there was which is something that is self-healing and like a problem pertaining to her. And yeah, a lot of scratches on the body. Like, she has recovered? She is recovering within her injury. It was like deep, so that she was in a recovery stage. And any future challenges the child will face due to these injuries? So see, you can say that 80-90% of the work is done, but still a long way to go. Okay? She has some improvements. Really know to see how she copes up, she get to join the team. So all those things we have to take consideration. Because whether it's for infection, this are achieved like fortunately she till now she never had any infection. Excellent. Yeah. Another, but still some amount of work is. And which are the exact surgeries that have been done on her? Okay. So I would say this was a very challenging case, especially maximum patient injury in this age group. They are very challenging because the bones are very delicate and really difficult to reduce. But I would say here, how crucial is the disciplinary approach. The perfect example. So, with the help of everybody, we could reach better outcome, and the child is doing very well, and I'm happy to inform. We could reduce all the fractures very well, and we would fix the fractures, without anything to be possibility, and that is the challenge. And more than that, the challenge is, the aesthetic outcome and the psychological problem of the patient. So we have achieved that. And in the future, I'm sure why it is important patient because the skeleton is growing. We don't want to damage that. They have to see that aspect also. By fixing, we should not damage the bones. I think
she's waiting for my phone. She's not ready. And after 3-4 months, where we take her in for small surgery. That's all. No, I wanted to know the exact surgeries which were done. Like which part of the body had to undergo the surgery. Face is one, right? Kind of injury. Surgery. Right foot. I think whatever religion also say, most of these surgeries are done not important process. Because of the medical details, we also want something it's too in detail. So I think these are two private developers. Maybe it can be understand. But even make us health is a soundset of mind and body. The bodily problems have been taken care of very well. I think Dr. Visuddha said mental health is gradually recovering. And I will request each one of you not to go get into the details of what exactly he does. Let's keep it little confidential, but I can definitely say that the child has done extremely well. And as most of my fellow colleagues are saying, children are less resilient and they heal very well. So body healing almost. अभिजित presentation करता था only internal kidney and liver, but that did not require any active surgical intervention. They were over parallel. And liver functions, kidney function, bodily function absolutely normalized family. आता फक्त ते mind recovery आणि डॉक्टर कोण ते वेगळे करते आणि फॅमिलीला फुल सपोर्ट करते. त्याच्यामुळे let us be supportive, let us pray, let us hope that he comes out of this as soon as. In this case, I think crowdfunding played a major role. So, like anything that you would like to talk about that, and how much was the amount that you got? And now, where in 2 days, 20 lakhs were arranged through the crowdfunding. I would really thank all of you. I think first thing when this session was done, I saw communication on the side reporting on that in plot. For funding part, majority of amount is through a funding, which is crowdfunding, crowdfunding platform, and a lot of donors also because of awareness which we got to media and all that. They personally came and they donated. We even received and holders all the details required for the family so that in future also we minimum 20 lakh rupees we got funding, 20-25 lakh rupees. Major part of treatment is done. Whoever has donated that value, we share the detail with them. It might require further treatment. Patient will get treatment, and after that we take further. येवले सर हॉस्पिटलचं उद्घाटन झाल्यानंतर 2 वर्षांनी त्या म्हणजे हॉस्पिटलचे संस्थापक प्रतापसिंह रेड्डी सरांनी घोषणा केली होती की आम्ही जनरल वॉर्ड सुरू करणार आहे. पण अजून मॅनेजमेंटने त्याच्यावर काही म्हणजे काहीच नाही. 2 गोष्टीची आठवण करून देतो. आमच्या चेअरमन सरांनी 2 घोषणा केल्या होत्या. एक तर हे 17वा हॉस्पिटल असल्यामुळे 70 फ्री टार्गेट सर्जरी आम्ही लहान मुलांमध्ये करणार आहोत, त्या पूर्ण झाल्या आहेत. आणि त्याच्या पलीकडे सुद्धा विविध योजनांमध्ये आम्ही सबसिडाईज त्याच्यामध्ये टार्गेट सर्जरीज अजूनही कंटिन्यू करत आहोत. नंबर 2 जनरल वॉर्ड करण्याचा विचार होता, पण त्यामध्ये आम्ही असं ठरवलं आणि मॅनेजमेंटला त्याच्यात पूर्ण पाठवलं, पूर्ण सपोर्ट आहे की आम्ही इंडिव्हिज्युअल लेवलला जे काही त्याच्या मेडिकल ट्रीटमेंटमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून जे काही कन्सेप्ट बेस्ट पॉसिबल ते पास होतो. तर आपण असं म्हटलं की सगळेच प्रायव्हेट वॉर्ड आहे आणि सगळेच जनरल. त्याच्यात एखाद्या डिझाईन पेशंटला डिस्काउंट किंवा काही त्याला आर्थिक अडचण असेल जातो एकदा हॉस्पिटल मार्फत किंवा आता उदाहरणार्थ ह्या केसमध्ये क्राऊड फंडिंग केस त्याच्यामध्ये बऱ्याच केसेसमध्ये पेडियाट्रिक कार्डिओलॉजी असते, डेटा 17 केस नंतर सुद्धा आपण केस करतो. ऑलमोस्ट काही केसेस असतील बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट आपण मागे एकदा ट्रान्सप्लेस कॉन्फरन्समध्ये आपण टाकतो. बऱ्याच केसेस आपण चॅरिटेबल केस आणि आणि कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोग्राम असतात त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये सुद्धा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून डेव्हलप नाही.
इमर्जन्सीमध्ये लाईफ सेव्हिंग ठिकाणी पैसे आयुष्य वाचवलं जातं आणि त्याच्यानंतर मग पैशाला वेगवेगळे ऑप्शन दिले जातात आणि आपण आर्थिक काही म्हणतो. ह्या केसमध्ये सुद्धा मी नव्हतो आणि सगळ्या लोकांनी सांगितलं असेल जर मला जर म्हणजे तुमच्याबद्दल किंवा तुमच्याकडनं काय मेसेज पाठवायचं कम्युनिटीला तो पहिला असेल जे सांगितलं किंवा नाही माहित नाही. ह्या केसमध्ये ट्रॉमा आयडेंटिफाय करून बाय स्टँडर्डनी तो लगेचच्या लगेच मेडिकल केअरसाठी आणणं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यासाठी मी लास्ट बऱ्याच दिवसापासून गव्हर्नमेंट बॉडीज आणि याच्याबरोबर काम करतोय की नवी मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये अशा इंजुरीज अशा ट्रॉमा जर झाला सगळ्यात पहिल्यांदा जे जवळचे लोक असतात त्यांनी मेडिकल ऍक्सेस देणंही महत्वाचं असतं. आणि आम्ही त्याच्यासाठी दुसरं म्हणत होतो आम्ही गोल्डन हिरो म्हणून एक नवीन कन्सेप्ट काढली आहे ज्याच्यामध्ये जी लोक आहेत जी पटकन अशा लोकांना इथे घेऊन येतील आणि त्यांची ती ट्रीटमेंट चालू होईल आणि आम्ही मात्र अगोदर कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये सिनियरेस्ट इमर्जन्सी असेल तर ते झालं तर त्याचा फायदा हा पेशंट आउटकम होणार असतो. ह्या केसमध्ये पटकन मेडिकल इमर्जन्सीमध्ये पटकन त्यांना ट्रीटमेंट मिळते. दुसरी गोष्ट तुम्ही ज्यावेळेस सेवा करता मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन आपण म्हणतो ती अवेलेबिलिटी पण त्याच खूप महत्वाची आहे. त्याच्यामध्ये सगळी लोक एकत्र येऊन ट्रीटमेंट करतात आहे आणि डेफिनेटली क्राउड फंडिंग and support fund. Can you say she the youngest accident patient that has come to you? No. Has undergone before? I think specifically for this case, I think primarily we've already said it enough number of times. It is not about this case, it is about highlighting to the community what actually the role is of the community in healthcare. It is supposed to be a network. Everything connects. In this particular case, highlight that very well. The very good, exemplary behavior by bystander, going to a smaller set of realizing the emergency care that they could do without, planning and managing. Then moving that on to the next best level, and then that multi-scale approach, giving all of that. It's highlighting that all the aspects, and to bring that across to the community. It is that. It is not our first press conference, it's not the first one. Actually, unfortunately, we do see a lot of these cases, and we, from time to time, highlight different aspects of it. So it is only to bring that out. We are all in this together, whatever we can use to trigger that across everyone, what their role is, and we'll keep harping on about basic life support. Medically speaking, again, we call it the chain of survival. Everybody linked in that chain. अगर पहला नहीं हुआ तो आगे का नहीं होगा. That kind of a system. So it is just to highlight that, and this is one of those cases, and there are plenty of those. And again, unfortunately, we get multiple opportunities to do this, and we should take that and give it the best shot so that the person who's, it could be any one of our family, friend, colleague who would benefit. So as a community, we need to come out, and that is why we are. So to just highlight 2 points for that in this case, first thing, the response of the bystanders, that's very important and we want to provide with. Then the child was taken to a nursing home and the time loss was not there. Secondly, the coming along of our multidisciplinary team, third, upon taking care of a child with no relatives to accompany without any financial consideration. And we those like support of the family and support of the community in so it's a total mixture of all this which we want to convey and we want to take a lead in highlighting this. In this case, the pivotal to the best outcome is the cooperation and the trust. That is very important because they have given the free hand
So I'm very thankful to you. You know, whatever we said, you were great.